This person in the picture called Mr. Narendra Modi is the Honorable Prime Minister of India, also the Member of Parliament for Varanasi, a member of RSS, a right-wing Hindutva paramilitary organization. He is the longest serving Prime Minister of India after INC. This is what Wikipedia shows. We clearly कल रात के संबोधन में ये नहीं देखा. Maybe the way he was quoting things were with respect to making his party happy, and of course, which was a great move. But being the Prime Minister of India and with this decreasing GDP, हम afford नहीं करते थे वो speech. I know even the consequences when you are not in favor of what Prime Minister says. I know all the charges. So मैं जो भी बोलने वाली हूँ with respect to boundaries ही बोलने वाली हूँ. So the last night the speech given by the Prime Minister of India was more about criticizing one party. किसी एक पार्टी को नीचा दिखाया जा रहा था और किसी एक पार्टी को superior बताया जा रहा था. But was this the motive of the speech? Actually में instead of all this, the topic was about the women reservation bill. What most India was expecting कि कैसे वो बताएं कि जो उन्होंने women reservation bill या जो भी amendment propose किए हैं वो कैसे better हैं ताकि हम समझ सके कि नहीं आपका point of view सच में better था and there was no way for opposing this. आप बताइए, I as a common citizen of India हमने ऐसा कौन सा point नहीं समझा उस bill के बारे में. I am totally in favor कि women को strengthen किया जाए politics में. But the point is, under what ground are we strengthening? ये जो amendment किया जा रहा है जिसमें constitution का article 82 बिल्कुल ही हटाया जा रहा है, constituency छोटी कर दी जा रही है, delimitations की जा रही हैं, ये कहाँ पे fair justice है? Maybe the people of India are not that even dumb. हमें पता है what is article 82. इसकी वजह से power totally reside करेगी government के हाथ में, not the constitution. Constitution के हाथ में जो powers होती थी हर 10 साल बाद सीट रिवाइज करने की, वो government के हाथ में आ जाएगी. So constitution की power रही कहाँ? In a sovereign country where equality, fraternity all lies in state, जहाँ पे constitution is the supreme power, nothing, not even judiciary, not even parliament, and we all know हम एक parliamentary system में रहते हैं, not like US जहाँ पे presidential system abide करता है. Every common people has a hope कि अगर कुछ गलत होगा government भी गलत करेगी तो constitution is there for us. We have fundamental rights, we can appeal in court against them. अभी RTI तो आपने खत्म कर दी, PIL आपने खत्म कर दिया almost. What else? 2023 में भी तो ये बिल आया था, तब भी तो पास किया गया था, पर तब अमेंडमेंट्स नहीं थी. तब आर्टिकल 82 को अमेंड करने की बात नहीं की गई थी, तब डिलिमिटेशंस की बात नहीं की गई थी, तब कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी करने की बात नहीं की गई थी, तब नॉर्थ साउथ डिवाइड नहीं डिस्कस किया गया था. उस टाइम भी तो बिल पास हुआ था. सॉरी बट पॉलिटिक्स खेलने तक ठीक है, बट this is not the one as a people of India we were expecting. Yesterday was a day where you had to represent yourself as a Prime Minister of India, not as a member of some party or leader of some party.